Good morning, Vita. All of you get light fast, then we are going to start. So today we have to discuss if anyone is having any question from project or the previous topics, you can ask in the chat box. I am able to see your chat box. ठीक है? तो उसमें पूछ सकते हो आप questions. There is not a problem. If you are going to ask the question from previous chapter, but today we are going to discuss about networking. ठीक है? And in networking also we are going to discuss about the protocols first. अब protocols क्या होते हैं? Protocols की definition जो है, that is set of rules and regulations. Protocol are nothing but set of rules and regulations which are used to effectively work the networking. This is used for whenever we are transmitting the data from one source to another source. Which type of protocol we are going to use, that depends upon the work culture. If you are doing SMS, in the networking, then different type of protocols comes in the consideration. ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, and whenever you are doing video chatting, that SMTP is not going to work, because at that time we are not doing normal chatting, text chatting. At that time we have to transmit the videos along with the chat. ठीक है, बोलने के साथ में, आवाज के साथ में आपका वीडियो भी जाता है. दैट्स वाई आपका दूसरा क्या नाम है, प्रोटोकॉल्स यूज होता है. अंडरस्टूड? इन द सेम वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड द प्रोटोकॉल विच इज ऑलवेज वर्किंग ऑन द नेट, दैट इज HTTP. ठीक है, नाउअडेज इट इज HTTPS. पहले वो जो मेन है द प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP. ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो whenever we are working on any type of media on internet, always HTTP will be associated, क्योंकि without HTTP we cannot read the scripting language, and all the websites are having the HTTP hypertext part in their websites, so they cannot be read by any other protocol. That's why this is the main protocol which is used for reading and transforming the data, checking the data as well. अब HTTPS का फुल फॉर्म होता है HTTP with security. Okay, hypertext transfer protocol. And the two protocols which are used for transmitting the data from one end to another end, that is TCP/IP and UDP. पहले भी डिस्कस किया होगा मैं, TCP/IP and UDP. TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ठीक है, these are the protocols which are used for transmitting end-to-end transmission. मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसपोर्ट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, and whenever we are using networking, whenever we are establishing a networking between different type of computers or devices, at the same time a particular layer is getting managed in the networking, that is called OSI layer, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ठीक है, वो लेयर यूज होता है. इन दैट लेयर एट द फिफ्थ, उसमें 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स आर देयर. एट द फिफ्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वहां पे. ठीक है, 7 लेयर को मिला के एक लेयर बनता है, दैट इज नोन एज OSI लेयर. और ये हमें नहीं बनाना होता, अपने आप ही बनता है. ठीक है, तो दिस यू शुड नो व्हाई, बिकॉज 4 mark questions are coming, the theoretical one. Apart from those 4 mark question, जो कि मैंने बताया कि एक ही क्वेश्चन के अंदर में 4 पॉइंट्स होते हैं और उसको क्वेश्चन आपको करना है. इफ यू गो थ्रू द एंड ऑफ द चैप्टर इन क्वेश्चन आंसर्स, most of the questions are that 4 part questions only.
और कहीं पे भी आपको वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड विथ this one. The next one is types of script. Types of script. HTML में HTML और DHTML. DHTML का मतलब होता है डायनामिक HTML. तो in DHTML we can include the pure languages like Java and .NET using their scripts. Java and .NET and Visual Basic are having their scripting language. JavaScript, VBScript and .NET का होता है ASP.NET, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं. They can be embedded in HTML, okay? तो they are going to become scripting languages. तो डायनामिक HTML के अंदर में, DHTML के अंदर में हम वो लैंग्वेजेस यूज करते हैं. HTML is having its own syntaxes, predefined syntaxes, and they are only getting used while designing the database, the website, not the database. This is used for designing the website, HTML. और DHTML जो होता है validations के लिए होता है, ठीक है. तो इन द सेम वे दो तरह का स्क्रिप्टिंग होता है, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड. Whenever the inputs are coming through webs, जब आप मान लो फॉर्म भरते हो, तो वो फॉर्म भरने के बाद जो whatever data you are inputting, that is going to get stored in a database. अब तो database का भी concept आपको समझ में आ गया होगा. आपने प्रोजेक्ट most of you have done the projects. तो प्रोजेक्ट में जो database का काम होता है, that is going to store the data, and wherever the data is getting stored, that is known as server, ठीक है. Right now you are doing on the single computer, वहीं पे आपका फ्रंट एंड भी है और वहीं पे आपका डेटा भी होता है. तो दैट same computer is working as a this one client as well as server. वहीं पे आपका फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी होता है, ओके. नेक्स्ट वन इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. जब आप यूजर इंटरफेस जो होता है ना, जहां से हम काम करते हैं, वेबसाइट का फ्रंट एंड, तो whenever we are doing the operations for the front end creation, designing, coding and whatever operations you are doing, and whatever languages used for doing that coding is known as client side scripts, ठीक है. और उसके एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि कुछ लैंग्वेजेस के नाम दिए होंगे एंड दे विल आस्क यू कि व्हिच वन ऑफ देम इज यूज्ड एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड व्हिच वन इज यूज्ड एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. तो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग तब होती है जब आपका डेटाबेसेस के साथ में काम होता है, वहां पे प्योर लैंग्वेजेस यूज होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आपका क्लाइंट साइड का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है, दैट इज PHP, JavaScript and VBScript. Client side scripting languages are there, ठीक है. VBScript, JavaScript and PHP is one of the language which is also used as a server side scripting as well as client side scripting language. उसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, बट जावास्क्रिप्ट एंड VBScript आर ऑलवेज यूज्ड एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. मतलब अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में से फॉर एग्जांपल यू वांट टू टेक ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी शुड हैव @ and dot, must have email ID must have @ as well as dot in the string. जो भी वैलिड ईमेल आईडी होता है, इसमें ये दो चीजें होनी चाहिए. तो whenever the user are going to give the input, before going to insert that value blindly in the database, you have to check that value, that value is correct or not, ठीक है. They are known as user validation. जब यूजर के डेटा के ऊपर आप वैलिडेशन लगाएंगे ना, दैट दीज थिंग्स आर नोन एज यूजर वैलिडेशन. तो इसके लिए हम यूज करते हैं VBScript एंड JavaScript. एंड दोज हु आर नोइंग PHP, they are designing their websites in PHP, they are using PHP also, ठीक है.
whenever we are applying validations in the form of codes on the users forms and objects is known as client side scripting. ठीक है, and VB script and JavaScript and PHP, these are the three languages which are used as a client side scripting. बाकी की जो languages use होती हैं they are used for server scripting. Is it clear till now? Is it clear till now? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ. If no doubt, you give me reply fast, yes or no. Anyone is having doubt till now? After the message also, the people are not getting live. Again, I am messaging in the group. Till that, all of you reply me fast. Very good बेटा. इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो अच्छे से समझ लेना. क्वेश्चन जरूर आएगा. इन दैट वन यू विल बी गिवन सम लैंग्वेजेस और उसमें से आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आपको डिवाइड करके बताना पड़ेगा कि which are comes under server side scripting and which are comes under client side scripting. Then only you will get 1 mark. Okay. क्लियर है बेटा. और उसके बाद अगर मान लो कोई आपको मान लो क्वेश्चन मिलता है इन दैट वन फुल फॉर्म का क्वेश्चन है एंड यू आर अनएबल टू गेट द फुल फॉर्म ऑफ दैट वन या यूजेज उसका पता करना है. फुल फॉर्म तो यू कैन गेट फ्रॉम गूगल आल्सो, बट नो बेटा, दैट लैंग्वेज इज वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट लैंग्वेज. ठीक है ना, ये HTML के जैसा ही होता है, बट सम फंक्शंस आर देयर. HTML में सिंटैक्सेस होते हैं बट यहाँ पे फंक्शंस होते हैं. ठीक है, उसको चेक करने के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं HTML के अंदर में, चेक बॉक्स बनाने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के अंदर लैंग्वेज के अंदर में फंक्शंस होते हैं. We are using those functions to access those values. ठीक है, text.length function होता है that is going to return you the length of the string which is there in the text. ठीक है, text box जो होता है उसमें एक length function होता है that is going to return the length of the text which is entered inside the text box. तो इसी तरह सबके functions होते हैं and those functions we are using while designing the websites. ठीक है, तो अब मैं बोल क्या रहा हूँ कि whenever we are designing the static website, static का मतलब होता है whose data from the web page is not going to change, but whenever we are doing dynamic website, जैसे आप forms भरते हो या अपने results देखते हो, so at that time whatever data is appearing on the page, web page is getting changed because that is connected with the server, and whatever input you are giving, according to the input you are getting the output. अगर आपने अपना रोल नंबर डाला तो आपका रिजल्ट आएगा, आपकी इंफॉर्मेशन आएंगी. किसी दूसरे बच्चे का रोल नंबर डाला तो उसकी इंफॉर्मेशन आती है वेबसाइट के ऊपर में. So that data is changing. So that those type of things are called dynamic websites. Those type of websites are called dynamic websites. अब देखो, जब रोल नंबर आप डालते हो तो यूजर वैलिडेशन क्या होता है? यूजर वैलिडेशन होता है कि if the roll number of all the students are of length 8 लेटर का वो जो है रोल नंबर होना चाहिए. तो आपका वहां पे यूजर एंड पे ही, वेबसाइट के एंड पे ही, वेबसाइट पेज पे ही वो वैलिडेशन लगा होता है. अगर तुमने 8 नंबर से कम का नंबर डाला और एंटर की प्रेस करी तो इमीडिएटली यू विल गेट द एरर कि आपका रोल नंबर गलत है. मतलब वो जो डेटा है दैट डिड नॉट वेंट टू द सर्वर और वहां से आपको एरर मैसेज नहीं आया, आपको पेज पे ही एरर आया. अंडरस्टूड? और दूसरा एक एरर होता है कि वंस दैट वैलिडेशन यू हैव पास्ड, मतलब आपने कोई भी नंबर दे दिया 8 डिजिट का,
ओके, एंड दैट नंबर वेंट टू द डेटाबेस। अब वो चेक होगा ना, आप चेक कर रहे हो ना, आपने जब वैल्यू इंसर्ट करी है, जैसे ऑथेंटिकेशन आप चेक करते हैं, तो आपने चेक किया ना कि ये यूजर आईडी और पासवर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। तो पहले आपको यूजर एंड पे ही चेक करना है कि दैट यूजर आईडी इज रिलायबल और नॉट। कुछ भी कैरेक्टर या कुछ भी लेटर्स हमने लिख दिया, अभी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें क्या होता है, बिकॉज दैट इज नॉट लाइव, तो उसमें क्या होगा, अगर किसी ने कोई भी यूजर आईडी ले लिया तो दैट विल चेक इन द डेटाबेस फर्स्ट डायरेक्टली। अब जब वो डेटा ही करेक्ट नहीं है तो हाउ दैट डेटा शुड गो टू द डेटाबेस फॉर चेकिंग, नहीं होना चाहिए वैसा। बट हमने वो उतने लेवल तक, बिकॉज दैट इज अ डमी प्रोजेक्ट, तो आपको सिर्फ आइडिया लेना था, दैट्स व्हाई यू डिड दैट। बट व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर लाइव प्रोजेक्ट, तो वहां पे यूजर में भी वैलिडेशन, यूजर एंड पे भी वैलिडेशन लगाते हैं, फॉर्म के एंड पे, पेज के एंड पे भी वैलिडेशन लगाते हैं, और सर्वर साइड में भी वैलिडेशन लगाते हैं बैक एंड में। when the data is going to be fetched or inserted in the database, there also we are putting validations। ठीक है, तो वहां पे चेक होगा वैल्यू, एंड इफ दैट वैल्यू इज नॉट देयर, दैट रोल नंबर इज नॉट देयर इन द डेटाबेस ऑफ द सर्वर, तो वो क्या होगा, वो बताएगा रोल नंबर नहीं है। बट यूजर के एंड पे क्या बताएगा कि वो जो रोल नंबर है दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। ओके, अंडरस्टूड बेटा? तो दिस इज नॉट देयर इन दिस वन, सिर्फ उनका नाम दिया होगा कि विच आर द लैंग्वेजेस, बिकॉज वी आर लर्निंग नेटवर्किंग, वी आर नॉट लर्निंग वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है, अगर आपको वीवी स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट पढ़ना है तो आपको HTML सीखना पड़ेगा। इन दैट वन वी आर गोइंग टू लर्न वीवी स्क्रिप्टिंग एंड जावा स्क्रिप्टिंग। नेटवर्किंग में ये नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज those websites are working in the network, that's why we should have that basic knowledge कि कौन सा लैंग्वेज इसमें यूज होता है। अब देखो, ये भी पता करने का तरीका होता है, whenever the page is going to open, जो आपका होम पेज ओपन होता है उसका एक्सटेंशन आप देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लैंग्वेज में ये वेबसाइट बनी है। ठीक है, जब आपका पेज ओपन होता है, जब एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसमें आपको लास्ट में देखना है कि उसमें JSP लिखा हुआ है, ASP लिखा हुआ है, ASPX लिखा हुआ है, ठीक है, या PHP लिखा हुआ है। तो PHP अगर लिखा होगा लास्ट में तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट PHP लैंग्वेज में बनी है। अगर JSP लिखा हुआ, J से स्टार्ट है एक्सटेंशन, तो दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेज इज मेड डेवलप्ड इन जावा लैंग्वेज। ठीक है, जावा में वो डेवलप हुआ है। ASP और C# अगर होता है वहां पे, ASP अगर होगा तो दैट वेबसाइट इज क्रिएटेड इन ASP लैंग्वेज। ठीक है, C# में .NET के अंदर में बना हुआ। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वेबसाइट्स कौन से लैंग्वेजेस में बनी है। ऐसे तो दूसरा और भी तरीका है, बट दिस इज वन। ओके, then is it clear the concept of server side scripting and client side scripting? अभी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, बट यहां तक सबको क्लियर है? अर्निस्ट, योर क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर बेटा? अब देखो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में एज आई टोल्ड यू, PHP इज आल्सो द लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस आर PHP के अलावा पर्ल होता है, ASP एंड JSP। ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। ASP is also one of the language, scripting language होता है। These all are scripting language and they are very much popular
if you are going to make your career in web-based application, making web-based application, because they are the languages which are only used in to develop web-based application. ठीक है, और जेएसपी का मतलब, जेएसपी का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेज, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ जावा, एडवांस जावा, which is used, which language is used for developing the websites, java server page, understood? And these are the languages mainly used for server side scripting, they are not used for client side scripting, ठीक है, जावा सर्वर पेज, ASP एक्टिव सर्वर पेज, एंड PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, ओके। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में मेन जो डिफरेंस है, मैंने क्या बताया आपको, दोनों में मेन जो डिफरेंस है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, दोस कोड्स आर एक्सिक्यूटेड इन द ब्राउजर इटसेल्फ, ब्राउजर में आपका एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है, और वहीं पे वैलिडेशन हो जाती है, वहीं पे मैसेज आ जाता है, तो आपको जो भी रिस्पॉन्स है वो फास्ट मिलेगा। एंड सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है, दैट दे आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट द सर्वर एंड, वो सर्वर के पास जाके एग्जीक्यूट होता है, एंड देन द मैसेज इज रिटर्न बैक टू द क्लाइंट साइड, एंड अल्टीमेटली दैट मैसेज इज गेटिंग रिसीव्ड बाय द यूजर, ठीक है, जिसने इनपुट दिया है उसी को मैसेज आएगा, बट वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको मैसेज आता है, अंडरस्टूड? क्लाइंट साइड जो है वो पूरा का पूरा ब्राउजर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो समटाइम वी आर गेटिंग द एरर मैसेज फ्रॉम द ब्राउजर आल्सो इफ दैट क्लाइंट साइड कोडिंग इज नॉट रिलायबल टू दैट पर्टिकुलर ब्राउजर। हर एक वेबसाइट जो है आपका प्रॉपर आउटपुट नहीं देता है हर एक ब्राउजर में, दे आर मेड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ब्राउजर, ठीक है, हर एक ब्राउजर का अपना रेजोल्यूशन, अपने वैलिडेशन, अपने मतलब उसके अंदर में जो आपका ब्लॉक होता है, जो भी एड्स ऑन आपने ब्लॉक किए होते हैं या उसमें ब्लॉकेज होता है कुछ एक एक्सटेंशन को, तो अकॉर्डिंगली द क्लाइंट साइड कोड्स आर नॉट गेटिंग एक्सिक्यूटेड कंफर्टेबली इन ऑल द ब्राउजर्स। तो इसलिए क्या होता है, हर एक वेबसाइट के नीचे में लिखा होता है दिस is going to give 100% of the performance, this website is going to give the 100% of the performance whenever it will be executed in this browser in this and this version also लिखा हुआ होता है, इस वर्जन में आप काम करोगे तो ये ओपन होगा। Sometime we are unable to open a particular video which is given or a photo which is inserted in a particular website, so that is also having the same problem of version of the browser or the browser, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होता है आपका क्लाइंट साइड का, सर्वर साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, इन दैट केस सर्वर साइड इज नॉट हैविंग प्रॉब्लम। सर्वर साइड का प्रॉब्लम तभी आता है व्हेन यू विल बी हैविंग एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एनी अदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन ब्राउजर एंड दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर। देन नेक्स्ट वन इज नेटवर्किंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। प्रोटेक्शन मेथड, आपको नेटवर्किंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर में मतलब व्हेनेवर anyone wants to access your email ID or password or your credentials, at that time what should you do, that is known as protection, ठीक है। तो प्रोटेक्शन में सबसे पहले होता है ऑथराइजेशन,
ऑथोराइजेशन का मतलब होता है कि whenever you are doing anything networking and all, तो at that time, ठीक है, you are having a network setup, तो at that time you require the authorization from the service provider. तो आपको ऑथराइज किया है सर्विस प्रोवाइडर ने वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। कोई अगर आपने नेटवर्किंग से रिलेटेड काम शुरू किया है तो यू हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द सर्विस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर और नॉट। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं तो किसी न किसी से आपने परमिशन दिया है या नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। देन द नेक्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आपने वैलिडेशंस लगाए हैं कि नहीं। ऑथेंटिकेशन मींस वैलिडेशन, ठीक है। व्हेनेवर द अदर पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू, और आपने जो भी डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया है, सर्वर में स्पेस दिया हुआ है आपने, उसके लिए आपने ऑथेंटिकेशन किया हुआ है या नहीं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाला है या नहीं डाला है, आपने वैलिडेशंस लगाई है ना नहीं लगाई है प्रॉपर, दैट इज कॉल्ड authentication. Whenever your computer is getting accessed by others, तो आपने वो ऑथेंटिकेशन लगाया है नहीं तो लगाया, पासवर्ड आपने कैसा डाला है, वीक डाला है या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला है, दिस ऑल कम्स अंडर ऑथेंटिकेशन। If anyone is having any problem in any of the topic, you can ask me the doubts, ठीक है, because till that you are not going to ask, I will not understand कि you are understanding or not. Okay, so you keep asking the question. Then encrypted smart card and biometric system. These are different types of protection tactics whenever we are using networking, ठीक है। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है whenever you are doing networking, firewall should be on. Whenever we are not working on network, you can switch off the firewall, because at that time from the network no data is getting transferred from your computer to any other devices through network. I am telling you, through network. पेनड्राइव जो लगाते हो वो नेटवर्क नहीं होता, ठीक है, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। तो व्हेनेवर यू आर, अब फायरवॉल का काम क्या होता है, बेसिकली फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, इट इज सम पार्ट ऑफ द हार्डवेयर इज आल्सो कम्स अंडर फायरवॉल। अब इसका काम क्या होता है, व्हेनेवर समथिंग इज कमिंग फ्रॉम नेटवर्क, दूसरे कंप्यूटर से किसी भी तरह से, किसी भी मीडियम से, दूसरे कंप्यूटर से या दूसरे डिवाइसेस से which is not directly connected with the computer, if the data is going to come, that is going to be checked by, जैसे आपका गेट पे कोई भी गेटकीपर या सिक्योरिटी पर्सनल बैठा हुआ होता है, and that is checking each and every person who is going to enter in your house, or in companies also that is there. In the same way firewall works in a computer. जब भी कोई बाहर से कोई भी चीज आएगी अंदर कंप्यूटर के अंदर में, it has to be stopped to the firewall, वहां पे रुकना है, उसको चेक होना है, and if that a firewall क्या करता है उसके पास जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, जो कि वैलिड एक्सटेंशंस हैं टिल डेट, that will be there, that database is there with the firewall. अब वो क्या करता है, उस डेटाबेस में जो भी फाइल आ रही है, रिसीविंग फाइल, उसका एक्सटेंशन को सर्च करता है। if that extension is suspicious and if that particular program is having some attachment, कभी कभी क्या होता है एक प्रोग्राम के साथ में दूसरा अटैचमेंट भी आता है, and that you are not aware about, so due to that also that firewall is showing suspicious messages कि this is the suspicious, ये डिलीट नहीं करता आपका किसी भी प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करता टू एंटर इनसाइड द कंप्यूटर, ओनली इट इज स्टॉपिंग till a particular time,
अगर आपने अलाउ कर दिया उसके मैसेज देने के बाद भी, तो आफ्टर नोइंग दैट दिस इज अ सस्पिशियस program, then also the firewall has to allow that program to enter in the computer. ठीक है, कभी कभी हम अलाउ कर देते हैं, इन दैट केस आवर सिस्टम इज गेटिंग करप्टेड, बट कम से कम उसने मैसेज तो दिया, कम से कम स्टॉप तो किया. इफ यू आर गोइंग टू से यस इसको स्टॉप करो, तो वो स्टॉप करके रखेगा. इट विल नॉट अलाउ दैट प्रोग्राम टू एंटर इन द कंप्यूटर. ठीक है, तो फायरवॉल हमेशा ऑन रखना चाहिए व्हेन एवर यू आर यूजिंग नेटवर्किंग. जब भी आप नेट यूज करें फायरवॉल जरूर ऑन करें. ठीक है, ऑलवेज यू कीप योर फायरवॉल ऑन. दीज आर द थिंग्स विच आर ऑटोमेटिकली डन बाय द प्रोटोकॉल्स. वो चेक करता है और आपको मैसेज देता है कि आपका फायरवॉल, इफ योर फायरवॉल इज नॉट ऑन, ये मैसेज देगा आपको अपने आप कि आपका फायरवॉल ऑन नहीं है. योर फायरवॉल शुड बी ऑन whenever you are going to connect your computer with the network. ठीक है, देन एप्लीकेशन गेटवे है, प्रॉक्सी सर्वर है, क्लाइंट लेवल गेटवे है. These all are the different authentication techniques and which are getting used by networking ISPs. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू दिस वन. अब कुकीज जो है और हैकर्स क्रैकर्स और साइबर लॉ, ये सब जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास नाउ. ठीक है, बिकॉज टाइम इज ओवर. ओके, so tomorrow also we will be live at the same time. Understood? ठीक है, thank you all of you to join the class. All of you, thank you to join the class. If anyone is having any doubt in today's class or the previous classes, you can ask your doubt tomorrow. Okay, or you can WhatsApp also. Thank you for joining the class. Now I am going to wind up the class now.